Okay. All right. So all those of you who have come in late, good evening once again. Sales proposals. How do we write winning sales proposal, and how do we practice this entire written communication in sales is the topic that we are going to discuss today. I will request all of you to please put your videos off and communicate with me through the chat box so that we know exactly how to take things forward. So if all of you are there on the chat box, just give me a hello on the chat box so that I know that all of you agree. Just give me a hello on the chat box. Is my audio, visual, everything clear? All right, Pankaj Ben, all the way from Gurgaon, Mayur, Rashmi, Sachin Bajpayee. All right, fantastic. So, ladies and gentlemen, you're going to talk to me only through the chat box and not otherwise. So, let's begin today's program. Based on the inputs of all of you, we have truncated the program to a half-an-hour program followed by a half-an-hour discussion, because many of you said that we want to have more detailed discussion. So we will give you half an hour for discussion and half an hour on the content. Okay, very good. What are the points for discussion? Do's and don'ts in sales proposals, objectives of a sales proposal, the structure of a sales proposal, and how do you craft a sales proposal, and what is corporate communication? Fantastic. First things first, most common mistakes. What are the most common mistakes made by people when they are writing a proposal? Tell everything about yourself, your product, and your company. So do you tell everything about yourself, your product, and your company and take that forward? Do you do it like that? Well, if you tell everything about yourself, your product, and your company, and you feel happy, you feel satisfied कि चलो मैंने एक बार में उसको सब कुछ बता दिया. दोस्तों, आपने एक बार में सब कुछ बता दिया, आपने उसकी क्यूरियोसिटी को किल कर दी, तो अब जब उसे लगेगा तो वो आपके पास वापस आएगा और शायद वो दिन कभी नहीं आता. It's a mistake. Don't try to tell everything about yourself, your product, and your company. We will have to tell only those things which the customer is interested in to know, isn't it? Second biggest mistake is proposal smells of I, me, myself. आप बहुत बार देखेंगे प्रपोजल्स में हम लिखते हैं हम इतनी बड़ी कंपनी है, हमने फलाने तारीख को स्टार्ट किया था, हम इतनी अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, हमारी क्वालिटी में 4 चांद लग जाती है, आप हमारे साथ डील करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह. अगर आपके प्रपोजल में सिर्फ आप अपनी गुण बखान रहे हो, if you're only trying to blow your own trumpet in your proposal, then that's not a good way, because why should the customer be even interested to talk to you or to read your proposal? Because tell me something, who in this world wants to even read something where he doesn't find a connect? No one, isn't it? So what are we looking at? We're looking at proposals which has more of you, your, and yourself. Do you have proposals which is full of you? You are running this company, you have this product, you use this raw material, and you must be facing these kind of challenges. Do you see the tone of the proposal? The tone of the proposal cannot be I, me, and myself. The tone of the proposal has to be you, yours, and yourself. And by you, I mean the customer. The third biggest mistake is that your need analysis of the client does not show in the proposal. The fact that you have done a need analysis, because if you give a proposal even without doing need analysis, then by God, you are committing suicide. That's not a proposal. How can you propose to someone without knowing that person? Isn't it? So I'm assuming that you are making a proposal only after doing a structured need analysis. But if your proposal does not show that you have done a need analysis of the customer, for example, if I'm selling master batches and if I just send a proposal that I make this master batch, the cost of my master batch is so much, this is the specialty in the quality that I make, where is your proposal talking about the customer?
And where is your proposal talking about the need analysis that you have done for the client? That's the third biggest mistake while preparing a proposal. The fourth big mistake while preparing a proposal is you write long proposal with loads of attachment. I have seen people writing 2 pages proposal with 5 attachments. You make the email so heavy कि सामने वाला खोलता ही नहीं उसको. Don't write long proposals because beauty lies in brevity. Beauty doesn't lie in vomiting out long pages. Use very long sentences with excess use of and. This is another great problem in writing proposal. If you write that I produce this quality and I also make this and I also do this and I also do this. Oh my God. That's a very long sentence. Normally, a good sentence should not have more than 7 to 8 words. So the moment your statement or your sentences have got more than 7 to 8 words, they are long. And people do not like to read long sentences. Mistake number 6, proposal is sent very fast without much thought in crafting the same. You know, I have got some clients, उनको अगर 3:32 पे कोटेशन की रिक्वेस्ट आती है तो 3:34 पे वो कोट कर देते हैं और बड़ा खुश होते हैं. They are very happy that Sanjay, I don't take time in sending quotation. I'm sure the customer is very impressed with me. They must be feeling great about me. Well, they are not feeling great about you because the customer is, he feels कि आपने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया उनके नीड के ऊपर. 3:32 में उन्होंने भेजा, 3:34 आपने भेज दिया, यानी कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप उसको कट पेस्ट करके डाल देते हैं. 6 great mistakes while writing proposal. I want you guys to come to the chat box and tell me, do you find these 6 great mistakes relevant? Do you find that these 6 mistakes are happening at your end also? Just put on a chat box, yes or no. I want to check out on the chat box, yes or no. All right, Prakash, Pankaj Bin, Ram Rashmi, Sachin Bajpayee, Mayur. Okay, thank you so much. Fantastic, wonderful, guys. अब अगर ये मिस्टेक्स नहीं करना है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स प्रपोजल शुड seduce a customer in a way that he is curious enough to respond and know more. Actually, proposal is a kind of seduction. I am trying to seduce a customer कि मेरे बारे में सोचिए, मेरे बारे में और सवाल पूछिए, मेरे बारे में इंटरेस्ट लीजिए. यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रपोजल का, isn't it? So when my proposal hits the customer, and if the customer is curious to know more about me, he's curious to reply to me, he's curious to respond to me, then I think that that's a good proposal. All right. Now, let's look at some of the objectives. Normally, when we send a proposal, it has got some fixed objective. Either it might be an introduction letter, or it could be a letter where you have to show your intent. It may be intention to buy, intention to sell, intention to get empaneled, intention to do a KYC. All right. So the second category of letters that you send to customers is intent based. The third category of letters that you send to customers are normally against inquiry. So there may be an incoming inquiry and you are responding to that inquiry. That's the third category or third objective of a written communication in sales. The fourth objective is when there is a problem or when there's a complaint. The customer has sent a complaint and you are responding to the customer's complaint. The fifth, of course, is a cost proposal when you're making a cost proposal to the client. And sixth is a response to a discount request. So friends, I have just tried to imagine 6 most common objectives of written communication in sales. And I'm not saying that these are the only objectives. There could be many more objectives. The important thing to understand here is what should be the structure of a proposal when you send it out? What should be the structure? Now, the structure of the proposal is very important to note that your proposal should be lucid, should be crisp, and should be straight talk. It should not be beating around the bush.
गोल गोल के घुमा घुमा के बात करने वाले प्रपोजल अच्छे प्रपोजल नहीं होते। लूसिड, क्रिस्प एंड स्ट्रेट टॉक होनी चाहिए। और एक स्टैंडर्ड प्रपोजल का एक जो स्ट्रक्चर है वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं। सब्जेक्ट लाइन सबसे पहले ऊपर सब्जेक्ट लाइन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, क्लोजिंग सैल्यूटेशंस एंड कॉल टू एक्शन। ये एक स्ट्रक्चर है प्रपोजल का। आप किसी भी कारण से किसी भी ऑब्जेक्टिव से प्रपोजल लिख रहे हैं तो उसमें उसके स्ट्रक्चर में ये 5 चीजें होनी चाहिए। आइए एक एक करके इन 5 चीजों को समझ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट लाइन। नाउ फॉर मी द सब्जेक्ट लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट element in a proposal, because the subject line decides whether the customer is interested to talk to me beyond this or not. The subject line kind of kindles the customer to respond to me. The subject line creates the interest in the minds of the customer so that the customer can think about me. Now, how do you frame your subject line? Kyunki the subject line must grab attention of the customer and must generate curiosity in the minds of the customer. ये दोनों बहुत जरूरी है। Grab attention of the customer and gain curiosity of the customer. Now this is tricky, isn't it? What should you write so that it gets attention of the customer as well as curiosity of the customer? So I have taken the example. Now if you can see on the screen, I'm taking the example of a real estate product. So I know that most of you are not from real estate, but doesn't matter. I'm just trying to take an example of real estate so that you can connect. So the subject line का जो theory है, it says that personify the problem. If you want to have a very catchy subject line, you must have the capability to personify the problem. Personify the problem का मतलब क्या है? देखिए जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, अगर रियल एस्टेट की बात हो रही तो लैंड, अगर मैं सब्जेक्ट लाइन में लिखता हूं लैंड बैंक ओनर्स विल बिकम रिचर, यानी मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप जमीन पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी बहुत कमाई होगी। अब इसी बात को सब्जेक्ट लाइन 2 ऑप्शन में मैं दिखा रहा हूं, लॉस स्ट्राइक्स नॉन ओनर्स ऑफ लैंड बैंक्स। देखिए मैंने पर्सोनिफाई कर दिया प्रॉब्लम को। सब्जेक्ट 1 में क्या लिखा है? लैंड बैंक ओनर्स विल बिकम रिच। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इट्स अ स्टेटमेंट कि लैंड बैंक जिसके पास होगा वो रिच हो जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इसी चीज को अगर मैं प्रॉब्लम पहले डिफाइन करूं तो क्या है प्रॉब्लम? अगर आपके पास लैंड बैंक नहीं होगा तो आप पुअर हो जाएंगे, राइट? तो मैं लैंड को पर्सोनिफाई करता हूं और देखिए मेरी सब्जेक्ट लाइन बन के आ रही है, लॉस स्ट्राइक्स नॉन ओनर्स ऑफ लैंड बैंक। यानी अगर आपके पास लैंड बैंक नहीं है तो लॉस विल स्ट्राइक यू। देखिए सब्जेक्ट लाइन बड़ा न्यूज की हेडलाइन की तरह दिख रही है, राइट? एंड दिस इज व्हाट क्रिएट्स मैजिक इन द सब्जेक्ट लाइन। जब मैं सिंपल लिखता हूं लैंड बैंक ओनर्स विल बिकम रिचर, सामने वाले को मजा नहीं आता। क्यों नहीं मजा आता? बिकॉज देयर इज नो प्रॉब्लम डिफाइंड देयर एंड दैट प्रॉब्लम हैज नॉट बीन पर्सोनिफाइड। इसी चीज को मैं सेकेंड लाइन में लिख रहा हूं, लॉस स्ट्राइक्स नॉन ओनर्स ऑफ लैंड बैंक। आई हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम एंड आई हैव पर्सोनिफाइड द प्रॉब्लम। So this is how a subject line is written, friends. And if you have understood what I meant by personifying the problem, can you please go to the chat box and write yes? Just write a yes for me in the chat box. All right, there's a query there from Millie, not all mistakes. Millie, could you exemplify what exactly you mean by that? All right, so there's a yes from Rajesh, from Sachin Bajpayee, Pankaj Ben, Rashmi. All right, thank you so much, wonderful. So now you understand the importance of a catchy subject line. Fantastic. Now let's go to paragraph 1. Paragraph 1 is pure salutations and greetings. Paragraph 1 को लंबा मत बनाइए, because the moment you have a long paragraph 1,
I have seen lot of proposals where वो लिखते हैं कि आपसे मिलके बहुत मजा आया, मैं फलाने तारीख को आपको मिला था और आपने मुझे बहुत अच्छी चाय पिलाई and मुझे मैं am very happy and obliged that you met me, you gave me audience. Nonsense. Don't waste your first paragraph in writing a story, because the moment the customer starts reading a proposal, every second counts. क्योंकि ग्राहक का जो नेचुरल फितरत है ना, the natural tendency of the customer is to not read the proposal, or to read the minimum amount of proposal and understand whatever is there in the proposal. This is the natural tendency of the customer. So if you create a very big paragraph 1, you are losing the vital time that you can use for telling something better. So my first paragraph, I always say that it should be one simple line which says that this refers to our meeting discussion on so and so date. अब डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव, अगर कोई इंक्वायरी है तो आप लिखिए दिस रेफर्स टू योर इंक्वायरी नंबर सो एंड सो. अगर कोई मान लीजिए कि कंप्लेंट है तो आप लिखिए दिस रेफर्स टू योर कंप्लेंट रेफरेंस नंबर सो एंड सो. So first paragraph, not more than 7 words, and very simple, the way I have given you example. Once the paragraph 1 is in place, now we come to paragraph 2. Now this is the second most important part of the communication. The first most important part of the communication was the subject, because subject line catchy नहीं होगा, अगर वो grab attention नहीं करेगा, you will lose out. The second most important part is the paragraph 2. And in paragraph 2, we normally write the challenge of customer and our solution to the problem. देखिए screen पे लिखा है. So ask yourself the question कि what is the challenge of the customer? So highlight the probable challenge at customer's end, and then state the generic solution that you will provide to customer in a way that the farmer gains financial. अगर इन दोनों को आपने कर लिया तो आपकी पैराग्राफ 2 बन जाएगी. ऑलराइट, नहीं समझ में आ रहा? ओके, एक एग्जांपल लेंगे इसको, कि जैसे मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल ले रहा था, तो रियल एस्टेट का ही एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ. So if I state the challenge, so what is the challenge of customer? Well, the challenge of customer is that normally he ends up buying a property which is technically not clear. Suppose that is one of the challenges. And what is the solution that you're going to give? You're going to give a solution that you deal only in technically clear properties. And how will you do it in a way that customer gains financially? So now if you combine these two statements, and if my objective of the communication is an introduction, so in second paragraph, I will write the challenge of the customer. So I'll write that it has been seen that customers who are not very much from real estate background end up investing in technically wrong properties. Full stop. Second line. We ensure that we only deal with technically clear properties and ensure that all our customers get an assured benefit of 20% appreciation in the next 2 years' time. Very good. That's a strong paragraph 2. All right, that's a strong paragraph 2. And then we move on to call to action. इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था? Structure, सबसे पहले subject line, then paragraph 1, then paragraph 2, then closing salutations, and then call to action. So call to action क्या होता है? ये एक बड़ा major problem है कि most of the proposals do not end with a call to action. भैया आप एक बहुत अच्छा proposal लिख के देते हो, लेकिन proposal के end में मुझे क्या करना है अगर आप clearly नहीं बताओगे तो मैं उस proposal को पढ़ के भूल जाऊंगा. So call to action is the last line of the proposal, which tells me as a reader of the proposal as to what's to be done. So your call to action must be precise, must talk about a benefit to the customer, must create urgency in the minds of the customer, must define कि करना क्या है, and it should be a no-brainer. बहुत ज़्यादा complex call to action बनाया जहाँ सामने वाले को समझने के लिए किसी की बातचीत करने की जरूरत पड़े, it's not a good call to action. So precise, benefit, urgency, defining the action, and no-brainer is a good call to action.
राइट? नाउ लेट्स क्विकली सी सम एग्जांपल्स. आपके सामने स्क्रीन पे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाह रहा हूं. जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन, और रियल एस्टेट की एग्जांपल ले रहा था तो उसी को कंटिन्यू रखते हैं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. सो देखिए इंट्रोडक्शन लेटर है, तो सब्जेक्ट लिखा है लॉ स्ट्राइक्स नॉन ओनर्स ऑफ लैंड बैंक्स. देन पैराग्राफ 1, आर मीटिंग विथ यू ऑन 10th instant refers, short and crisp. Then the fluctuating nature of real estate prices put a lot of investors thinking about it. Only those who invest money on time. We have land banks which come with an assurance of appreciation up to 10% in the next 6 months. देखिए क्या हुआ, सेकंड पैराग्राफ जो कि रेड कलर में दिख रहा है, मैंने प्रॉब्लम को डिफाइन किया और उस प्रॉब्लम के एवज में हमारे पास क्या सॉल्यूशन है वो डिफाइन किया, खत्म. Paragraph number 3, which is basically the call to action. So we are conducting a plot darshan tour on so and so date, wherein our vehicle will take you to a trip of 5 best plot properties of your city. Call to action. क्या करेंगे आप? मुझसे मिलके क्या करेंगे आप? मेरे प्लॉट दर्शन में आइए जो कि फलाने तारीख को है, और नीचे लिखा है वेरी क्लियरली, प्लीज इंटीमेट योर इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम प्योरली विद अ व्यू टू एनरिच योर नॉलेज एंड नॉट टू बाय. डरो मत, सिर्फ देखने आओ. ये जो इंट्रोडक्शन लेटर आपके सामने है, इसमें वो सारे रूल्स फॉलो हुए. पैराग्राफ 1 की रूल, पैराग्राफ 2 की रूल, कॉल टू एक्शन के रूल, शॉर्ट एंड क्रिस्प. अब इसके साथ मैं अटैचमेंट में लगा सकता हूं कि अगर आपको प्लॉट दर्शन में आना है तो उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटैच कर सकता हूं. ऑलराइट. सिमिलरली इफ my intention, if I want to if the objective of my communication is to write about an intent, so when my objective is to write about an intent, so you see how I do. So subject is empanelment as a real estate vendor. Suppose मैं किसी corporate में अपने आप को empanel करना चाह रहा हूँ, if that is my intention. So dear sir, our meeting with you on 10th instant refers, paragraph 1. Paragraph 2, we bring the core competency of dealing with only technically researched real estate properties, comes with an assurance or a testimony towards performance for last 5 years enclosed. देखिए पैराग्राफ 2, problem has been defined, solution has been defined, and testimony has been attached because इसका intention empanelment है. And नीचे call to action, we solicit empanelment as an authorized vendor of real estate in your corporate. Following the rules, I'll show you one more example. If the objective of your proposal is to answer to an inquiry, so subject, we would love to have you as a customer. देखिए subject matter कितना interesting है. आपने मुझे इंक्वायरी किया, मैंने सब्जेक्ट में लिखा वी वुड लव टू हैव यू एज अ कस्टमर. अब लिख रहे हैं डियर सर, योर इंक्वायरी बियरिंग रेफरेंस नंबर रेफर्स द विला फॉर विच यू हैव इंक्वायर्ड is a value for money proposition with an assurance that you will find a new home for yourself. We are hereby sharing an e-book which will give your property prices escalation in last 10 years. देखिए क्या हुआ इसमें पैराग्राफ 2 में, अगेन प्रॉब्लम डिफाइंड, अगेन सॉल्यूशन गिवन, and there is a value bomb given along with it. क्योंकि ये इंक्वायरी है तो उसे इंगेज रखने के लिए मैंने उसको एक ई बुक दे रहा हूं जो पिछले 10 साल से आपके सिटी की प्रॉपर्टी प्राइसेस की ब्यौरा दे रहा है. और फिर नीचे में कॉल टू एक्शन दे रहा हूं, टू एनेबल्स अंडरस्टैंड यू बेटर वी आर हियर बाय इंक्लोजिंग ए केवाईसी व्हिच यू मे प्लीज फिल फॉर अस एंड ऑब्लाइज. वेरी गुड. एक और नमूना आपको दिखाता हूं, कंप्लेन. मान लीजिए रिटन सेल्स प्रपोजल, कोई किसी का कंप्लेन आया. देखिए सब्जेक्ट सॉरी हैप्पी टू हेल्प. सबसे पहले मैंने लिखा सॉरी बिकॉज ये सामने वाले को बड़ा प्लेकेट कर देगा. हैप्पी टू हेल्प, डियर सर, योर कंप्लेन बियरिंग रेफरेंस नंबर सो एंड सो रेफर्स, प्लीज अलाउ अस टू स्टडी द कंप्लेन एंड ट्रबल शूट द सेम आफ्टर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन. देखिए बहुत सारे लोग सॉरी बोलने में डरते हैं, बोलते हैं यार एक बार सॉरी बोल दिया तो मुझे उसको भरना पड़ेगा, दंड भरना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों. आपने सॉरी उसकी हाल पे बोला है, आपके लेटर में बहुत क्लियर है. एंड देन देयर इज अ कॉल टू एक्शन, वी प्रॉमिस टू हेल्प यू इन ऑल आवर अर्नेस्टनेस एंड फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन. तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये कॉस्ट प्रपोजल के ऑप्शन हैं. तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं इनको पढ़ के वन थिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू,
that read the proposal. Once you prepare the proposal, please read the proposal as if you were the customer. एक बार प्रपोजल बनाने का प्रिंट आउट निकालिए और उसको बोलिए कि चलो ये मैं कस्टमर बन के इसको पढ़ता हूं. And then ask yourself, does it excite you? Do you feel connected to the proposal as a customer, not as a seller? जब आप एक बायर बन के प्रपोजल को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रपोजल में जान है कि नहीं है. All right. And towards the end of today's program, as I promised all of you today, guys, the program is for 30 minutes and the balance 30 minutes we are keeping for live interaction with all of you so that some of you can implement some things that you learn here. So as we come towards the end of the program, I still have 4 more minutes. Please understand what is corporate communication. You're running a company. आप कुछ communication codes create कीजिए. क्योंकि हर एक को अंग्रेजी नहीं आती, हर एक को समझ नहीं आता और हर एक की कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं. तो देखिए मैंने 5 अलग अलग डब्बे बनाए हैं. इनकमिंग, आउटगोइंग, इंट्रा इनकमिंग यानी इंट्रा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर इंट्रा आउटगोइंग और इंटर डिपार्टमेंट. ऐसे 5 बक्से हैं. आपके फैक्ट्री से या आपके बिजनेस से तमाम communication, all the communication which is made by you, your business, can be categorized into these 5 boxes. Now you ask yourself, that's like incoming. अब incoming में क्या incoming आएगा? या तो incoming inquiry आएगी या inquiry आएगा, दोनों में फर्क होता है. या complaint आएगी या referral आएगा या order आएगा या visitor आएगा. तो हर केस में ये जो 6 केस है, अगर इन 6 केस में किस प्रकार का प्रपोजल लिखेंगे, अगर एक स्टैंडर्ड प्रपोजल बना लिया जाए और उसको एक कोड दे दिया जाए, ताकि इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू आर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट टू डू ऑल योर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. So what you can do is you can hire an expert to prepare all your communications and codify it. Now the moment it is codified, suppose the code number 001 is about handling incoming inquiry. अब अगर आपके पास कोई इनकमिंग इंक्वायरी आता है, आप अपने सेक्रेटरी को बोल सकते हैं कि इसको कोड नंबर 001 वाली लेटर भेज दो. तो आप एक इंश्योर कर पाएंगे कि जो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन जा रही है वो अच्छी है. क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, यू कैन नेवर परफेक्ट द कम्युनिकेशंस फॉर अक्रॉस द हायरार्की. मे बी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, बट जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी का हर बंदे का अच्छा हो जाए. तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने दिए हैं, ये पावर पॉइंट स्लाइड आपसे शेयर करूंगा. इस ऑप्शन के कटघरे में आप इमेजिन करके अलग अलग कम्युनिकेशन बना लीजिए. नॉर्मली एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में कुछ 50-60 कम्युनिकेशन प्रपोजल्स के बनते हैं. ये 50-60 कम्युनिकेशन के प्रपोजल को कोड कर लीजिए एंड देन यू कैन मेक यूज ऑफ योर पीपल टू मेक यूज ऑफ द राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. So that's all that I wanted to tell you today. That's a lot of big thank you from my side to all of you to have taken out your time to participate in today's program. Now is the question answer session, and I would request all of you to put your videos on and ask your questions. We have invested a complete half hour towards answering your questions. So let's look forward for it. I'll put the recording off so that you can ask your questions very clearly. Thank you very much.